Hey everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in this video, I'm going to do Kaplan kit of F8, and in today video, I'm going to cover section A of F8. Okay, so before I starting this video, let me tell you, if you guys have don't subscribe to my channel and watching for the first time, just subscribe to my channel and share it among your friend, and don't forget to hit the bell icon for more updates. Okay, so we do have a 5 question, and for that we have to read this particular scenario. Let's read out. Okay, the board of director of sister company are concerned that they are not currently applying best practice in the terms of corporate governance and are seeking to make improvement. The company currently has a 3 NED, okay, on the board, who are paid a fee which changes annually depending on the company performance. Okay, so the NED are paid on the basis of the company performance, right? The NEDs all sit on the audit, nomination, and remuneration committee. There are currently no reference to the work of this committee in the annual report. At present, sister company does not have internal audit function, but the director are establishing a team which will be responsible for a range of internal audit assignment. The following is the current proposed structure of the for the internal audit department. Okay, so we do have a head as a finance director, head of internal audit unit, internal audit manager, and then we do have a two audit assistant. So basically the finance director is the head, and who is the responsible for maintaining the financial record and supervising the financial function, right? And ये internal audit manager का I mean head of internal unit का head है. Okay, so the only role still to be filled is the head of internal audit. There are two potential candidates, Paul being a consultant who helped design and implement the company's current control system, and Marek, who is currently an audit manager at Rosie and Bill, an audit firm which have never been used by Sisterco. Out of the other three members of the proposed IA department, two of them have moved from the other department in Sisterco, and one of the audit assistant has audit experience. Okay, so let's read out the question one by one, and in case of if required, we will read out or refer the scenario again. Okay, which of the following should be included in the audit annual report regarding the work of audit committee? Okay, so the first is responsibility for preparing the annual report and financial statement. So this is the basically responsibility of director, not the audit committee. Okay, significant issue considered relating to the financial statement. Obviously, this gonna be included in the annual report. Okay. After that, a description of principal risks that company faces. So this gonna be responsibility for the board, and the process used to make appointment to the board. This is the responsibility for the nomination committee. Okay, so I'm going to show you something which is gonna be useful. So basically the question asks what things should be included in the annual what things should be included in the annual report regarding the work of the audit committee. So if you guys have gone through the book, you might have find this. Let me show you. Okay, so here are the, some list of the items that need to be included in the report. The annual report should describe the work of audit committee, including significant issue considered relating to the financial statement. So this is what the option B of the question clarified, right? How it assesses the independence and effectiveness of the external audit process, where there is no internal audit function, an explanation for the absence and how the internal assurance is achieved, an explanation of how auditor in the annual report, their responsibility for the preparing the annual report and the account. So the okay,
So these are the things that need to be included in the annual report. Okay, so आप इसको याद कर लेना, ठीक है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द डिफिशेंसी रिलेटिंग टू द एनईडी रेम्यूनरेशन एंड मेक्स ए वैलिड रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट. अब वैसे अगर आप यहाँ पे वी हैव टू चूज द वन डेफिशिएंसी, आई मीन out of these four option we have to choose one which will be with the deficiency and recommendation for those deficiency, है कि नहीं. सो अगर ऐसा डिफिशेंसी देखा जाए तो यू माइट गेट कंफ्यूज. तो बेसिकली अगर रिकमेंडेशन के पार्ट से हम लोग अगर ऑप्शन को इलिमिनेट करें सो वी कैन गेट द आंसर, है ना. ओके, सो हमारा फर्स्ट है कि कंप्रोमाइज एनईडी इंडिपेंडेंस. ओके फाइन. एंड उसके बाद रिकमेंडेशन वी हैव एनईडी शुड बी रेम्यूनरेटेड ऑन द सेम बेसिस एज द एग्जीक्यूटिव टीम. दिस शुड नॉट बी द रिकमेंडेशन. अगर एनईडी हम लोग को एनईडी को सेमली जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव टीम को पे कर रहे हैं वैसे हम लोग उसको भी रेम्यूनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे इंडिपेंडेंस पे बात आ जाएगा फिर. तो ये ऑप्शन डेफिनेटली नॉट गोना बी आवर आंसर, ठीक है. एनईडी रेम्यूनरेशन शुड बी टाइड टू द प्रॉफिट टारगेट. ऑब्वियसली नॉट. एनईडी का रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी टाई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. इससे भी क्या होगा, उसका इंडिपेंडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद एनईडी रेम्यूनरेशन शुड बी सेट अमाउंट बेस्ड ऑन द टाइम कमिटेड. ऑब्वियसली एनईडी एम्प्लॉय नहीं होता है, उसको हम लोग एज अ मतलब पार्ट टाइम ही ऐसे कह सकते हैं. वो उसको मतलब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होता है वो फुलफिल करता है. वो एम्प्लॉय नहीं तो उसको कंपनी के परफॉर्मेंस से भी मतलब नहीं होता है. वो जितना काम किया जितना टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग वो ही विल गेट द सैलरी एंड जो वॉट एवर जो मतलब कंपनी से उसको मिल रही है, ठीक है. तो ये दिस कुड बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर, है ना. सो लास्ट हमारा है एनईडी रेम्यूनरेशन शुड बी लिंक टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. नो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसके लिए यू हैव टू रीड द बुक. बुक में क्लियरली ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द बुक. ओके, सो बेसिकली एनईडी जो होते हैं ना वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मॉनिटर करने के लिए होते हैं और जो भी कंपनी का स्ट्रैटेजी है डायरेक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. वो यूजुअली पार्ट टाइम बेसिस पे ही मतलब एम्प्लॉयड होते हैं, वो फुल टाइम नहीं होते हैं. एंड वो जो रूटीन डे टू डे एक्टिविटी होता है कंपनी का उसमें भी पार्ट नहीं लेंगे. इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और ये ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट. ज़्यादा के लिए बुक ही पढ़ना पड़ेगा. यू गाइज हैव टू रीड द बुक. Okay, so next question is the board is in the final stage of establishing the internal audit department. Select one of the team from each column which provide appropriate recommendation to the improve the effectiveness and independence of the IA department. तो पहले report to financial director no, audit committee yes and chief executive. So यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट वो ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करेंगे. यही कह रहे हैं. सिलेक्ट द वन ऑप्शन फ्रॉम द ईच कॉलम. सो तीनों कॉलम से वी हैव टू चूज द वन ऑप्शन विच प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द IA डिपार्टमेंट. ऑब्वियसली दे शुड रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी एंड हेड ऑफ IA डिपार्टमेंट. ओके, बेसिकली वी डू हैव 2 person chosen for the head of internal department and the paragraph related to them are okay here. The only role still to be filled is the head of internal audit. There are 2 potential candidates: Paul Belling, a consultant who helped design and implement the company current control system, and Merrick, who is currently an audit manager at Roosevelt, an audit firm which has never been used by sister co. Okay, so basically out of these 2 candidates, company should go for the Maria because मतलब Maria has an audit experience as well, but Paul के पास तो नहीं है, and Paul is designing the company control system. If Paul is chosen as a head of internal audit department, there could be the self-review threat might be created. So इसीलिए Maria.
And remaining staff member appoint more senior staff with audit experience. No change needed. All staff should be new to the company. Okay, so for ये remaining staff member के लिए more experienced staff should be appointed, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे न्यू टीम है ना, एक्सपीरियंस की कमी है. सो यहाँ पे इस सिनारियो में कहीं दिया था, आई थिंक जैसे लगा मुझे, पढ़ा था मैंने. Out of the other three members of the proposed IA department, two of them have been moved to the other department in sister co, and one of the audit assistant has a audit experience. ओके, सो इसीलिए उनको मोर अपॉइंट करना है, मोर सीनियर स्टाफ को विथ ऑडिट एक्सपीरियंस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो रिमेनिंग स्टाफ में से एक ही के पास ऑडिट एक्सपीरियंस है. 10 और नेक्स्ट क्या हमारा. ओके, द बोर्ड हैज स्टार्टेड टू कंपाइल ए लिस्ट ऑफ टास्क फॉर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट टू कैरी आउट वंस इट इज up and running. It has been agreed that the first assignment to be completed will be for IA to the review sister co process over capital expenditure to verify its right items are purchased at an appropriate time and competitive price. Okay, so which type of internal audit assignment does this represent? Value for money audit, management audit, financial audit and IT audit. Okay, so basically the company is क्या बोलते हैं, फर्स्ट असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड विल बी फॉर IA टू. ओके, सो IA के लिए फर्स्ट असाइनमेंट क्या है, टू रिव्यू द सिस्टर कंपनी प्रोसेस ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब नॉन करेंट एसेट पे परचेज कर रहे हैं, उसको रिव्यू करना है. टू वेरीफाई इफ द राइट आइटम आर परचेज एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड एट कम्पिटिटिव प्राइस. तो इनमें से कौन सा ये रिप्रेजेंट करता है, द क्वेश्चन इज आस्किंग. Okay, so if we talk about an IT audit, so this basically confirm the things related to the IT, है कि नहीं. so यहाँ पे तो नॉन करेंट एसेट की बात हो रही है, so this will not gonna be our correct option. थर्ड, फाइनेंशियल ऑडिट कंफर्म द कॉस्टिंग, कोई फ्रॉड हो रहा है कि नहीं, लाइक जैसे कि अभी इनवॉइसेस प्रिपेयर ये कर रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस टाइप का होगा. सो ये भी हमारा लाइक दिस असाइनमेंट को आई मीन जो टाइप ऑफ नॉन करेंट एसेट परचेज कर रहे हैं उसके लिए ये रिलेवेंट नहीं है. मैनेजमेंट ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेशन, सो ये भी हमारा नहीं है. बच गया वैल्यू फॉर मनी, एंड वैल्यू फॉर मनी मीन्स 3 इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड दैट्स बीइंग रिव्यू बाय द IA regarding the purchase of capital expenditure. Right item to be purchased means at appropriate time and competitive price. ठीक है. Okay, so last, which when deciding on role of the IA department in undertaking the operational audit, which two of the following should the team not be involved in? Okay, observing the procedure carried out by sister co-staff. Obviously, because they are the internal audit department. Sorry. क्या था? Observing the procedure carried out by sister co. हाँ सही है. ओके, सो ये बेसिकली हाँ, ये तो ऑब्वियसली टीम इन्वॉल्व होती है ना, बिकॉज वहाँ पे ऑडिट डिपार्टमेंट है टू रिव्यू द वर्क, है कि नहीं. सो ऑब्वियसली दिस विल बी इन्वॉल्व. रीपरफॉर्मिंग द प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड इन द मैनुअल प्रोसेस. यस, इसको कंफर्म करने के लिए कि प्रोसीजर राइट वे में या फिर करेक्टली कंडक्ट हुआ है कि नहीं, ये भी इन्वॉल्व करते हैं, ये भी रोल मतलब इन्वॉल्व होगा. Design and implementing the internal control procedure to address deficiency. Yeah, this should be done by management, not by the IA department. ठीक है. So उसके बाद reporting finding directly to the board of the director. हाँ, ये भी होता है, ये भी करते हैं. Authorization transaction and performing reconciliation. Basically we internal audit department review the authorizers, ना कि वो खुद ही authorize करते उस चीज़ के लिए. सो यहाँ पे 2 पूछ रखा था कि कौन सा यहाँ मतलब रोल में इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड दैट्स C and E, 3 and 5. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन. तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके, फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू so much for watching this video.